Good afternoon, everyone. My name is Kuldeep Kaur, and welcome to my channel Study My Way. So, here I have started a new series called Fast Revision of Inorganic Chemistry. Line by line NCRT is really a tough task. And so, for those students, here I'm out with the most important lines that would be asked in your exams or the paper, and the past year questions are also included in the PDF. So also the neat students can be very confident after watching the video. So here let's start the video. So here we are starting first of all the hydrogen chapter of class 11. See here see मैं ये assume करके चलती हूँ that you must have read the NCRT at once, because एक बार आप NCRT पूरी thoroughly read कर लेंगे, thereafter if you watch a video it would really be beneficial for you. So when we just see here, like, if you watch this video and you assume that yeah, the whole hydrogen chapter would be on your tips, so I should say that that's not a very good idea, because first of all, like, you should be reading NCRT thoroughly and then watch this video. So hydrogen chapter would be on your tips. So not wasting much of the time, let's start of the interesting chapter. First of all, this gives us the introduction part. Here the question can be framed out. This line is becomes very very important. It says about hydrogen, the most abundant element in the universe, and it is the third most abundant on the surface of the globe. So that becomes very important, that if you talk about most abundant element in the universe, that's again important, so that it is hydrogen. And if you talk about on the surface of the globe, then it is the third most important. इस line को जो होते हैं mostly students ignore कर देते हैं, but this is not the line to be ignored. And okay, now moving on to the next paragraph we have, that's not much important in this paragraph. देखो अब ये वाला जो पैराग्राफ है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, इस वाले पैराग्राफ में जस्ट टॉकिंग अबाउट कि hydrogen has its resemblance to the alkali metals and also to the halogen group. This is very very simple paragraph. Everybody knows that it has one electron, so we can say it resemblance to the alkali metals. Also it has one electron left to lose its complete electronic configuration, so it resemblance to halogens. Everyone know this, but this paragraph you must read it. Means it's a common like information that you have been knowing it. So यहाँ से question एक frame हुआ है that has been come in AIMS 2000. So अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन होती है, ये मोस्टली लाइक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं. लाइक हाउ एवर अनलाइक द अल्कली मेटल्स, इट हैज़ अ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डज नॉट पोजेस मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द नॉर्मल कंडीशन. सो क्वेश्चन आपका इस तरीके से फ्रेम हो सकता है, लाइक इट्स रिजेम्बलेंस टू अल्कली मेटल्स. ओके, वी नो दैट इट इज like we can say resemblance to alkali metals, but there are two things that hydrogen does not have resemblance to alkali metals. So the two things are that they have very very high ionization enthalpy and it does not possess metallic character. So these two are the things. मतलब it has its behavior to alkali metals, लेकिन इन दोनों चीजों की वजह से जो है we cannot say that it's completely alkali metal. Okay. अगर हम रिएक्टिविटी के सेंस में देखें, सो अगैन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अगर हम रिएक्टिविटी के सेंस में देखते हैं, सो इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी लो. हियर द की वर्ड इज वेरी लो. इसकी जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू द हेलोजेंस. सो आप देखते हैं कि इस पैराग्राफ में सिर्फ दो लाइन आपको इंपॉर्टेंट एज सच इंपॉर्टेंट मिले. ये वाली जो बीच की लाइन्स हैं दैट यू मस्ट हैव रेड वंस, ऐसा नहीं है, बट व्हेन लाइक आपका टुमारो एग्जाम एंड यू हैव टू रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, so you just have to focus on these lines. Like in this paragraph, the first was this line and the second was this line, that when we compare to halogens, so what is the keyword out here? Very low. Moving on to next paragraph, this paragraph mein aisa koi important cheez nahi hai to be revised out before the exams. अब let's move on to dihydrogen. See, सबसे पहले हम बोलते हैं most element, and this is the key word to remember here, that it is 70% of the total mass of the universe. And see, like
you can, like, this is a factual information that it constitutes 15.4% of the earth crust and the oceans. Although itna वैसे minute question it should not be asking in the paper, but you never know, inorganic chemistry के बारे में कुछ नहीं कह सकते. From anywhere, any line, the question can be asked. So you must remember that it constitutes 15.4% of the earth crust and the oceans. Moving on to the isotope of the hydrogen, this paragraph itself is very important. You must write this paragraph is very very important. See, now देखो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी markings मिल रहे हैं, but how to just read all these lines rather than reading the whole paragraph. Let's just focus on the most important lines. What are the most important lines? Let's just see. Number one thing is proteum. Proteum, we say that it has no neutrons. So keyword is no neutrons. Okay, now the question can be asked that which one of them is known as the heavy hydrogen. So which one of the them is known as the heavy hydrogen? That's your deuterium is known as heavy hydrogen. Now, famous personality Harold C. Urey, he got the Nobel Prize in separating the hydrogen isotope. Now the question can be asked this way also, that what is the predominant form of the hydrogen? That you can say that it is your protium. Now this line, see this line again is, यहाँ पे भी ज़्यादा factual information आ जाती है, but still you can just remember terrestrial hydrogen contains 0.016% of deuterium, mostly in the form of Hd. नाउ अब देखो, लाइक इस पैराग्राफ में जब हम देखते हैं ये वाली लाइन, ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एंड इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल्स. अब नोबडी कैन इमेजिन, लाइक बिफोर नीट 2021, अब ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है. बट really NTA पे भरोसा करना is not a good idea, because it can ask questions from inorganic chemistry from anywhere. So it's rather than revising the important lines, ये भी important हो जाता है कि हमें हर paragraph से like reading तो एक बार होनी ही चाहिए, and most important lines तो दिमाग में on tips होनी ही चाहिए बिल्कुल. like तो इस पैराग्राफ में से हमने ये देख लिया कि प्रोटियम नो न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रियम आल्सो नोन एज योर हेवी हाइड्रोजन. वी लर्न अबाउट द फेमस पर्सनालिटी हैरल्ड सी यूरे. predominant form is protium. Then NEET 2021 question, tritium is radioactive and it emits low energy beta minus particles. Please remember this, beta minus particles. Okay, now when we move forward we get a table. अब इस table को I, when I was preparing, I also ignored the table, because obviously who will learn the entire who will learn this entire table. So let's just see ki what's is the most important thing in this table. We see out here that melting and boiling points. Melting and boiling points, if you will compare out, you don't have to learn these values. ये values आपको learn नहीं करनी है. Just आपको एक trend पता होना चाहिए कि सबसे highest, if you see the melting and the boiling point, so that would be of your tritium. ओके, सो दिस पैराग्राफ में से ये यही सारी लाइंस इंपॉर्टेंट थी. अब देखो, अब नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हियर, आउट वी सी आउट हियर. इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आई होप व्हेन यू वुड बी रीडिंग दिस लाइन यू मस्ट हैव इग्नोर्ड दिस लाइन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. द ओनली डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ द रिएक्शन, यानी उनके रेट्स ऑफ द रिएक्शन में इतना डिफरेंस क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ योर बॉन्ड डिसोसिएशन. सो दिस इज द की वर्ड दैट यू मस्ट remember, like it's important. Okay, now moving on to the preparation of dihydrogen. See, these are the reactions that I have just ticked out, क्योंकि ये बहुत एक common reactions है, सबको पता होता है. like जब zinc को acid में डालते हैं, it gives out to be, it pops out the hydrogen gas, and जब sodium hydroxide में डालते हैं, it forms sodium zincate and pops out hydrogen gas. But still I've ticked, that means that you should be knowing the reactions. देखो, after that ये वाला जो हम आते हैं, commercial production of dihydrogen, that means you must read it very thoroughly. सबसे पहले हम आते हैं कि हम लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ डू वी गेट हाइड्रोजन. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एसिडिफाइड वाटर. देखो, आपको इसमें कैसे याद रखना है, आप कैसे याद रख सकते हैं. सबसे पहले जब हम एसिडिफाइड वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, सो इसमें हम यूज करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कि भाई लाइक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं इन योर एसिडिफाइड वाटर. अब जब हमें हाई प्योरिटी चाहिए होती है, रिमेंबर द कीवर्ड हाई प्योरिटी, दैट इज वाई मैंने इसे पिंक मार्कर से मार्क किया है, सो दैट यू रिमेंबर. जब हमें हाई प्योरिटी चाहिए होती है तब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का, एंड हियर व्हाट वी आर यूजिंग द निकल इलेक्ट्रोड्स. सो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हम कहाँ निकल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं और हम कहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. सो दिस लाइन अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट. वेरी प्योर चाहिए होती है तो वी यूज वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड, इसमें हम निकल इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, और एसिडिफाइड वाटर में हम यूज करते हैं बेसिकली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स. ओके, नाउ ब्राइन एट एनोड कैथोड रिएक्शंस, अगेन दे आर वेरी कॉमन, यू मस्ट बी नोइंग द रिएक्शंस. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. मतलब yeah, there are more probability of asking a question from this paragraph. So जब हम देखते हैं कि ये देखो, like what is water gas, what is syn gas, all this you must be knowing. देखो यहाँ पे आपको देखो ये देखना है कि mixture of CO and H2 को हम क्या बोलते हैं. We say out to be water gas, right? अब लाइक देखो हम बोलते हैं कि हम CO प्लस H2 को वाटर गैस होने के साथ साथ वी से सिंथेसिस गैस ऑल्सो. सिंथेसिस मीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ समथिंग. सो इसमें किस चीज की सिंथेसिस हो रही है, मेथनॉल की सिंथेसिस हो रही है, एंड अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो दैट इज वाई CO प्लस H2 के मिक्सचर को हम वाटर गैस के साथ साथ सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं. देखो अब अगर हम CO और H2 जिसे हम सिन गैस बोल रहे हैं उसका प्रोडक्शन अगर हम कोल से कर रहे हैं यानी कार्बन से कर रहे हैं, so that process is called as a coal gasification. The production of dihydrogen can be increased. Now अब ये वाले पैराग्राफ देखो, अब सबको पता होता है ठीक है दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ज़्यादा जल्दी जल्दी रीड करने के चक्कर में ये वाला पैराग्राफ हम मोस्टली छोड़ देते हैं कि अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन को पढ़ाना है, सो what's this is important. That's why I have written those things is important that are important obviously, plus those students ignore that things are important but that are being ignored by the students. By reacting carbon monoxide of the syn gas in the presence of iron chromate as a catalyst, so marked with a green marker. Okay, let's just move downward. Next is this again water gas shift reaction. आपको पता होना चाहिए, that is very very important. देखो दिस इज अगैन अ वेरी वेरी कॉमन इन्फॉर्मेशन कि भाई डाइहाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, लाइटर व्हेन इट्स सॉल्युबल इन द वाटर. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन इन्फॉर्मेशन, यू नो एवरीवन मस्ट बी नोइंग इट. बट केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ऑब्वियसली बाकी इन्फॉर्मेशन को मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, बट ज़्यादा लाइन आप इस लाइन पे ध्यान देना चाहिए आपको. द एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है दैट इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट. यानी अगर आप एक सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में बात करें, सो एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट. दिस इज द क्वेश्चन. अगर आपने बुक्स लगाई होंगी ओपी टंडन या फिर अलग अलग बुक्स जो आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या फिर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा. सो दिस लाइन इज अगेन इंपॉर्टेंट. ओके, so moving on to the next paragraph. So this is again very simple and factual information rather ki it can lose one electron, it can gain one electron, it can share one electron. Agar hum reaction with so again this line is ignored by the students. Reaction with the fluorine ke bare mein baat karte hain, so that can take place in your dark, right? And reaction with iodine obviously requires a catalyst, so that is obviously matlab it's obviously a common information, बट फिर भी गलत हो जाती है ये वाली इन्फॉर्मेशन. देखो दीज रिएक्शंस अगर आप देखते हैं, रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, देखो ये भी एक बहुत मतलब एवरीवन नोज दिस दैट दिस रिएक्शन विद द डाइनाइट्रोजन इज नोन एज अ हेबर्स प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मार्क्ड इट, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इतनी पूछी भी नहीं जाती है, एंड प्लस ये बहुत इजी भी है एंड कॉमन भी है. लाइक रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल आयंस. ओके, सो नॉट मच क्वेश्चन. ओके, नाउ देखो अब यहाँ पे थोड़ी हमारे ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स obviously using a catalyst will give us the edible fats. Okay, now hydroformylation of olefins, or olefins we all know, that's why I've written out here alkane. So paraffins are known as alkane, olefins are known as alkane. So जब हम इनका hydroformylation करते हैं they give us aldehyde. So these reactions are again important for you people to know it. And okay, let's moving on to the next paragraph, uses of dihydrogen. अब देखो uses of dihydrogen हम बड़े ही लेम तरीके से पढ़ते हैं. लेम मतलब लेम इन द सेंस बहुत लाइक जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं. लार्जेस्ट यूज ऑफ हाइड्रोजन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड. बट नो, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें ध्यान देने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड जब वो क्वेश्चन में आते हैं ऑब्वियसली फिर वो नेगेटिव्स में चले जाते हैं. लाइक देखो द लार्जेस्ट यूज उसका क्या है. अगर लार्जेस्ट वर्ड आता है तो यू शुड बी एक ही दिमाग में चीज आनी चाहिए, हेबर्स प्रोसेस यानी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, और बाद में वो अमोनिया आपके नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज होता है.
आप देखो, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स कॉल्ड मेथडॉल, ये सब पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज आप छोड़ देते हैं कि इसमें कैटलिस्ट कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ है, दैट इज बीइंग कोबाल्ट, दैट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब ये देखो, ये वर्ड आपको ध्यान होना चाहिए कि वाइडली इसे कहाँ, आई एम सॉरी, वाइडली इसे कहाँ यूज करते हैं, वाइडली इसे आप यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ योर मेटल हाइड्राइड्स। तो ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए कि वाइडली हम कहाँ यूज करते हैं, लार्जेस्ट कहाँ यूज करते हैं, एंड मेथनॉल में कौन से कैटलिस्ट में यूज करते हैं, दैट्स इट। यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन में ये इतनी इंफॉर्मेशन जाननी is sufficient for us. Okay, moving on to next paragraph. Again, this is very very easy. It is being used in the rocket fuel cells में से use करते हैं। Then देखो, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है कि जब हम इसके बात करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि भाई एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस, ये आपकी वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होती है, दैट्स इट। सो हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया एंड वी हैव कवर्ड आउट मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाउ अब ये हाइड्राइड वाला पोर्शन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इस चैप्टर में। सो देयर आर थ्री, देखो इंपॉर्टेंट, आई हैव आल्सो रिटन आउट टू बी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तीन तरीके के हाइड्राइड्स हमारे पास होते हैं। अगर आपको ये वाली लाइक जो अनमार्क्ड है इस पीडीएफ में, अनमार्क्ड लाइंस, वो लाइंस ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़नी है, वो लाइंस एक बार रीडिंग लगानी है, लेकिन ये जो मार्क्ड लाइंस हैं वो लाइक एवरी टाइम यू डू अ रिविजन, एवरी टाइम यू रिवाइज दिस चैप्टर, ये लाइंस जरूर आपको रिवाइज करनी है, दैट्स व्हाई दीज आर मार्क्ड। देखो, आयनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मेटालिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, ये तीन हाइड्राइड्स हमारे पास है। अब आयनिक और सलाइन हाइड्राइड, ऑब्वियसली इतना बड़ा कंटेंट टू रीड इज रियली अ वेरी टफ टास्क। सो जस्ट हम यही पढ़ेंगे, मार्क पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, एस ब्लॉक से बनते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर। देखो, अगर इसका नाम आयनिक है, देखो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें ऑब्वियसली कॉमन थिंग्स तो होती ही हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर हम कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें, सो दैट इज बीइंग शोन बाय दीज थ्री कंपाउंड्स, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। बाकी इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। सलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट, अब हम देखेंगे कि वॉलेंटली विद वाटर, तो इसमें हमने सिर्फ चार थिंग पढ़ी और इस पैराग्राफ को छोड़ के हमने आगे मूव करा। लिथियम हाइड्राइड इज वेरी, फिर हमने पढ़ा कि इट इज अनरिएक्टिव, मॉडरेट टेम्परेचर विद O2 और Cl2। देन दीज रिएक्शंस अगेन आर, देखो दीज रिएक्शंस यू विल से कि दे वुड बी इग्नोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, बट you have to you have to read these reactions, they are important. ओके, लेट्स मूव डाउन विद कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में ज्ञान बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सो जस्ट हम मार्क पोर्शंस पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। जिससे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, एंड योर लाइक ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स भी है। लाइक इफ यू जस्ट सी आउट हियर कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो आपका ग्रुप 13 को में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज आपका ग्रुप 14 में होता है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स आपका ग्रुप 17 टू ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 आपका जो होते हैं ये बनाते हैं, राइट। अब हम आते हैं मेटालिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ये ग्रुप 7, 8 और 9 बनाते हैं। ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं बिकॉज इनके जो लाइक एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होल्ड गुड नहीं, मतलब ये ट्रू नहीं है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो है वो मेटालिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के लिए ट्रू नहीं होता है। देन this line is very important except for hydrides, nickel, palladium, cerium, and actinium. Other hydrides of this class of letters is different from that of the parent. See, देखो ये मार्क लाइंस पढ़ने का आपका ये फायदा है कि लाइक सपोज आपका कल टेस्ट है, यू आर गोइंग फॉर अ टेस्ट एंड यू हैव टू रिवाइज लॉट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मतलब आप उस टाइम पे ये नहीं अफोर्ड कर सकते दैट यू वुड बी रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन very thoroughly, because that would take really a lot of time. So वहाँ उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, ये आपको जो मार्क पोर्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करने होते हैं। सो उस मोमेंट के लिए ये मार्क पोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस आप ये बोल सकते हैं कि लाइक ईच एंड एवरी टाइम यू आर रिवाइजिंग, आपने 2-3 बार एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लाइन थॉरली पढ़ ली है, अब आपको जल्दी जल्दी चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, देन यू कैन गो थ्रू दिस
अंडरलाइंड और मार्क पार्ट्स। आफ्टर दैट अगर आप ये वाले मार्क पार्ट्स पढ़ते हैं तो ये जो बीच की लाइन्स हैं दे आर नॉट मतलब मच इम्पॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन इतने नहीं बनते, बट स्टिल आई वोंट सजेस्ट यू टू टेक रिस्क in especially in your JEE and NEET examination, because inorganic chemistry anyway question can be asked. सो देखो अब हम यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि लाइक मेटल्स लाइक palladium and platinum, they can really store large amount of hydrogen, that is why they are used for storing media, and is some hydrogen storage and we use it as a source of energy also. Okay. Okay, so let's just end up the video out here only, and we would be discussing water and hydrogen peroxide, its structure, its properties, and some of the previous year's question in the next video. So hope you all like the video, and keep studying, keep enjoying, and if you like the video, please share, subscribe. Thank you.